Nandana Brajatana Rangana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Madhava Kunj Bihari Radha Madhava Radha Madhava Kunj Bihari Radha Madhava Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Madhav Radha, Madhav Radhe, Radha. Jaya Radha, Madhav Radha, Madhav Radhe. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Gauda Pimanande, Jayam Vishupad Paramahamsa, Privrajagachaja Stotara Satya, Sri Simad, His Divine Grace, Celebrate Charanarvind Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Skandi Biti, Founder Charyas, Divine Grace, Srila Prabhupada ki, Namacharya, Srila Haridas Thakur ki, Primsika Ho, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gradhara, Sri Vasadi,
Gaura Bhakta Vrinda ki Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhana ki Sri Vrindavan Mathura Dhama ki Sri Dwarka Dhama ki Sri Jagannath Puri Dhama ki Sri Navadip Mayapur Dhama ki Sri Mayapur Chandraday Mandir ki Ganga Mai Jamunamai ki Tulsi Devi Bhakti Devi ki Harinam Sankirtana ki Samaveta Bhakti Vrinda ki Transcendental Book Distribution ki Jai Shri Sri Gauranitai ki Jai Shri Sri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki Jai Shri Krishna Balaram ki Jai Shri Giri Govardhana ki Jai Shri Sri Radha Madhava ki Jai Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and to Sri Gauranga, all glories to Sri Prabhupada. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Salakaya Takshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Darati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Parakamalam Sri Gurun Vaisnavam Sya Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakanvitam Sya Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kansana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tirubhyascha Kripa Sindhu Bhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Nam Shaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirayat. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, let us first offer our respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Narayan Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta prayesha badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering a service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Sakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya
Dhanyam Swastayanam Mahat. Dhanyam Swastayanam Mahat. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God, Sri Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sri Advaita Gadadhara, Sri Vasari Gaura Bhakta Vrinda, Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, 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 Om Shri Surabhyai Namaha, 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 Mukam karoti vasalam pangum langayate girim Yatkripa tamaham vande Sri Gurum Dinataranam Yatkripa tamaham vande Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. We continue to read from first canto of the Bhagavatam. We need translation? Yes, ma'am. To translate that? Okay. Yes. So yesterday we covered Srimad Bhagavatam, Canto number 1, Chapter 2, Text 20. That means that today we are doing Text 21. Hare Krishna. Good. Vidyate Hridaya Grantish Chidyante Sarva Samshayaha Kshiyante Chasya Karmani Drishta Eva Atmani Ishvare Vidyate Hridaya Grantish Chidyante Sarva Samshayaha Kshiyante Chasya Karmani Drista Evat Manishvare Vidyate Hridaya Grantish Chidyante Sarva Samshayaha Kshiyante Chasya Karmani Drista Evat Manishvare Vidyate Hridaya Grantish Chidyante Sarva Samshayaha Kshiyante Chasya Karmani
Drista evat manishvare. दृष्टा एव ईश्वरे विद्यते हृदयाग्रन्थे Vidyate hridaya grantish. छिद्यन्ते सर्वसंशयः Chidyante sarva samshayaha. क्ष्यन्ते चस्य कर्माणि Chayante chasya karmani. दृष्ट एवात्मानीश्वरे Drista evat manishvare. विद्यते हृदय ग्रन्थे Vidyate hridaya grantish. सिद्ध्यन्ते सर्व संशयः Chedyante sarva samshayaha. क्रियन्ते चस्य कर्माणि Kriyante chasya karmani. दृष्टा एवात्मनीश्वरे Drista evat manishvare. Okay. Vidyate, विद्यते pierced. pierced Hridaya, हृदय heart. heart Grantihi, ग्रन्थिः knots. knots Chidyante, छिद्यन्ते cut to pieces. cut to pieces Sarva, सर्व all. all Samshayaha, संशयः misgivings. misgivings Kriyante, क्रियन्ते terminated. terminated Cha, च and and asya, अस्य his. his Karmani, कर्माणि chain of fruitive actions. chain of fruitive actions Driste, दृष्टे having seen. having seen Eva, eva certainly. certainly Atmani, atmani unto the self. unto the self Ishvare, ishvare dominating a factor. dominating factor. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki. Thus the knot in the heart is pierced, and all misgivings are cut to pieces. The chain of fruitive actions is terminated when one sees one's self and one's master. You can translate. Actually, it's better to do line by line. Otherwise, Okay. yeah. So translate the verse. Thus the knot in the heart is pierced. No. हृदय के जो ग्रंथि होता है उसको छिद होता है एंड जो हृदय के जो कष्टकर होता है वो सभी चला जाता है. जो कर्मों के फल का जो रिएक्शन रहता है वो सभी चला जाता है जब वो खुद अपने आप को आत्मा मानता है. Our problem in the material world is karma phal. हमारे भौतिक जगत में हमारा प्रॉब्लम का सिचुएशन है हमारा कर्म फल जो रहता है इसी के वजह से हम कष्ट अनुभव करते हैं. We are forced to remain in the material world because of fruitive reaction, karma. हम ये भौतिक जगत में इसलिए रहते हैं कि हम हमारे जो कर्मों का कार्य करते कर्मों के हिसाब से ही हम काम करते रहते हैं. And karmic reaction means adharma. कर्मों का फल माने अधर्म. If we don't know or don't follow dharma, we get or create karmic reaction. हम धर्मों का पालन नहीं करते हैं तो हमको कर्मों का फल मिलते हैं. Yes. So here Prabhupada is giving explanation in the purport. Attaining scientific knowledge of the personality of Godhead means seeing one's own self simultaneously. भागवत भक्ति का ज्ञान प्राप्त होने का मतलब है कि हम अपने आप को और भगवान को एक ही साथ में देखते हैं. Means real self-realization is to not only know that we are spirit soul, but to also know who is the supreme spirit soul. नहीं, जो आत्मा ज्ञान का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को आत्मा
भी समझे और ये भी जाने कि कृष्ण भी देवोत्तर परम पुरुष है. Means Atma Gyan. Atma Gyan, knowledge of the soul, means knowledge of Jivatma and knowledge of Paramatma. आत्मा ज्ञान या जीवात्मा के ज्ञान का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को आत्मा भी समझे और ये भी समझे कि हमारा संबंध भगवान के साथ भी है. Yes. Most people in the material world don't know about Jivatma and also don't know about Paramatma. भगवत ये भौतिक जगत में अनेक लोगों को ये मालूम नहीं है कि हम जीवात्मा है और परमात्मा भगवान भी है, इसके बारे में मालूम नहीं. So therefore they are, all of their activities are creating karmic reaction. इसलिए उनका जो भी वो कार्य करते हैं उनको कर्मों का फल मिलता है. It is said every bite we eat, we are, without this Atma Gyan, we are creating karma. इसमें बताया गया है कि हम जो भी एक मुंह में चबाते हैं, समझे एक बार भी हम मुंह में चबाए तो जो व्यक्ति को आत्मा ज्ञान का विषय नहीं मालूम है, आत्मा ज्ञान के बारे में मालूम नहीं है, वो उसको कर्म भुगतना पड़ता है. So how many bites we eat every day? हम कितने बार अपने मुंह को चबाते हैं एक दिन में? Every week, every month, for the whole year? एक वीक में और एक महीने में कितने बार हम मुंह में चबाते हैं? Means all the time, every day we are creating, accumulating karmic reaction. इसका मतलब ये है कि हम हर महीना हर साल हम कर्मों का फल स्टॉप कर रहे हैं. And it is this karmic reaction, either good karma or bad karma. Actually, karma, whether it is good or bad, both actually is bad. कर्म हमको प्राप्ति होता है, वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, लेकिन कर्म का फल हमें रहता ही है. Yes. Activities of the soul are above karma, therefore they are called akarma or naishkarma. आत्मा का जो कार्य होता है वो कर्मों से मुक्त होता है, इसीलिए उनको वो कार्य को अकर्मा कहते हैं. So that is the special quality, special feature of bhakti, devotional service. Devotional service means no karmic reaction. इसलिए हमको भक्ति योगा करना है. भक्ति योगा का मतलब ये होता है कि हमें कर्म मुक्त रहते हैं. Yes. So Prabhupada continues here in the purport, as far as the identity of the living being as spirit self is concerned, there are a number of speculations and misgivings. जो आत्मा के बारे में बहुत सारे उनका ज्ञान बराबर हमको प्राप्ति नहीं है. The materialist does not believe in the existence of the spirit self, and empiric philosophers believe in the impersonal feature of the whole spirit without individuality of the living beings. जो भौतिक प्रपंच का जो व्यक्ति होता है वो आत्मा के बारे में उसका विश्वास नहीं रखता है, और जो निराकारीवादी है वो भगवान का जो आत्मा है, भगवान का परमात्मा के उसमें विश्वास नहीं रखता है. So that means that both the karmi and the jnani have imperfect knowledge. जो कर्मी है और जो ज्ञानी है उसका ज्ञान अपूर्ण है. Yes. The karmi or materialistic person does not believe in the soul. ये दोनों व्यक्ति आत्मा में विश्वास नहीं रखते हैं. And the jnani, who is speculating, may have some understanding of the impersonal feature, but not of the individual existence of the soul. जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो निराकार
कृष्ण के निराकार का वादी का बारे में विश्वास रखता है और आत्मा ज्ञान के अपने खुद का आत्मा के में उतना जानकारी नहीं रहता है. But the transcendentalists affirm that the soul and the supersoul are two different identities, qualitatively one, but quantitatively different. जो आध्यात्मिकवादी है वो ऐसे मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा का दोनों का भिन्न है, दोनों में समानता नहीं है, लेकिन वो मानते हैं कि गुण में समांतर होता है, लेकिन जो क्वांटिटी जो रहता है उसमें समानांतर नहीं रहता है, वो भिन्न होता है. Just like the example given by our acharyas, the drop of water, the drop of sea water, the taste is salty, just like the ocean, but the drop in quantity is different. In quality, has the same quality as the ocean, but in quantity, we cannot swim in the drop of water. जैसे कि हमारे आचार्य उदाहरण देते हैं, ये समुद्र का जो पानी रहता है वो उसमें एक ड्रॉप लिया तो समुद्र के ड्रॉप का पानी और समुद्र से पानी से कोई टेस्ट में डिफरेंस नहीं रहता है, लेकिन जो भी व्यक्ति अपने आप को उतना अगर समुद्र में स्विम करना चाहता है तो उसमें नहीं हो सकता है क्योंकि इतना विशाल है. So in the same way, in a similar way, the Atma, spirit soul, we have the same quality as the Supreme Soul, the quality of Sat Chit Ananda Vigraha. और हमारा जीवात्मा जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है और परमात्मा का जो गुण है वो जीवात्मा में भी है, सच्चिदानंद विग्रह. Satchitananda Vigraha, we are as spirit soul also eternal, full of knowledge, and meant to experience full transcendental happiness. हम जो जीवात्मा है हम सदा काल रहते हैं और पूर्ण प्रमाण में आनंद प्राप्ति करने के लिए हमको मौका है. And Vigraha, we also have form. विग्रह माने हमको भी रूप है. Just like now we have form, material form. Prabhupada explains that material form is a perverted reflection of the original spiritual form. प्रभुपाद जी बताते हैं ये जो भौतिक रूप हम देख रहे हैं वो आध्यात्मिक रूप का एक बिंब है. There are many other theories, continuing here in the purport, there are many other theories, but all these different speculations are at once cleared off as soon as Sri Krishna is realized in truth by the process of Bhakti Yoga. ऐसे बहुत कुछ विषय है जो वो सही नहीं है. जब वो एक व्यक्ति कृष्ण का प्राप्ति करने का कार्य शुरू करता है तभी कृष्ण के बारे में जानने के लिए तो आसान होता है. Sri Krishna is like the sun. You can open the door to let the sun come in. Krishna, not so cold. Huh? Sri Krishna is like the sun, and the materialistic speculations about the absolute truth are like the darkest midnight. कृष्ण सूर्य के समान है और जो भौतिक प्रपंच का जो ज्ञानवादी होते हैं वो उनको कृष्ण के बारे में कृष्ण का रात के बारे में, जैसे कि रात में कुछ नहीं देखता है वैसा ही वो उनका जो तत्व हो रहता है वो रात के तत्वों के जैसा हो रहता है. So therefore Prabhupada, he would quote Surya, Krishna Surya Sama Maya Handakar, Maya Andakar. Krishna is like the sun, and when we are not in Krishna consciousness, then we are under the influence of Maya, which is Andakar, or darkness, means ignorance. Yeah. हम कृष्ण प्रज्ञा में जो रहते हैं इसका मतलब ये है कि हम सूर्य में रहते हैं और जो व्यक्ति
कृष्ण प्रज्ञा में नहीं है, वो उसको वो माया में है, वो जो है वो अंधकार है. There are only two things in the material world, Krishna and Maya. ये भौतिक प्रपंच में दो ही चीज होता है, एक कृष्ण और दूसरा माया. If we are not in Krishna consciousness, we are in Maya consciousness. हम कृष्ण के प्रज्ञा में नहीं रहते हैं, तो हम माया के प्रज्ञा में है. Yes. And in Maya consciousness means, Maya means, as explained here, andhakar. Andhakar means not understanding, not in knowledge, and therefore all of our activities are creating karma. Yeah. ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಯಾದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. हम माया में रहते हैं तो हमको ये समझना है कि हम माया के हमारे कर्मों का फल मिल रहा है. It's like every day when we are able to see the sun, when there are no clouds, everyone is very happy. When it is cloudy, everyone becomes miserable. ನಾವು ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೋ, ನಾವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ನಾವು ಸೂರ್ಯನ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂಥರ बेजाराली इर्तीवी. हम सूर्य को देखते हैं तो हम चेतना में रहते हैं, अगर हम सूर्य को नहीं देखते हैं तो उतना हम उत्साह से नहीं रहते हैं. So those who do not have the sun of Krishna consciousness, automatically it means they must be miserable. जो व्यक्ति जिसके पास कृष्ण प्रज्ञा का सूर्य नहीं है, वो अंधकार में रहता है और उनको कर्मों का फल जो मिलता है. ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸೂರ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ವೋ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So Srila Prabhupada continues in the purport, as soon as the Krishna sun is arisen within one's heart, the sun doesn't rise only outside but rises inside. As soon as the Krishna sun is arisen within one's heart, the darkness of materialistic speculations about the absolute truth and the living beings is at once cleared off. ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋ ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತೋ, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. जैसे कि हमारे हृदय में जो कृष्ण का सूर्य जो उदय होता है, तो कृष्ण के बारे में जो अंधकार रहता है वो सभी चला जाता है. In the presence of the sun, the darkness cannot stand, and the relative truths that were hidden within the dense darkness of ignorance become clearly manifested by the mercy of Krishna, who is residing in everyone's heart as the super soul. ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಕತ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೋ, ಅದೇ ತರ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಾಗ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. Second paragraph. In the Bhagavad Gita 10:11, the Lord says that in order to show special favor to His pure devotees, He personally eradicates the dense darkness of all misgivings by switching on the light of pure knowledge within the heart of a devotee. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃಪಾ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಖುದ್ದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತೀವ್ರವಾದ ಅಂಧಕಾರನ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತಾನೆ. Therefore, because the personality of Godhead's taking charge of illuminating the heart of his devotee, certainly a devotee engaged in his service in transcendental love cannot remain in darkness. ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯನ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ
ಅವನು ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ. Such a person or such a devotee comes to know everything of the absolute and relative truth. ಸೊ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ. That means that actually it is, as mentioned a few seconds ago, it is by the mercy of Krishna, because Krishna resides in the heart of all living entities. Krishna is all pervading. Not only in the heart of the living entities, Krishna is in every single atom. So within a heart, Krishna, by his mercy, gives the ability to know and to understand. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಜಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನ ಅಣುದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ. The devotee cannot remain in darkness, and because the devotee is enlightened by the personality of Godhead, his knowledge is certainly perfect. ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಅವನು ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಪ್ರಕಾಶವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. Yes, that is the difference between a devotee practicing Krishna consciousness and someone who is not a devotee. ಇದೇನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಹಾಗೂ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ. Whatever a devotee speaks, it is according to what Krishna or Shastra is telling. Therefore, what Krishna is telling is perfect. If we simply repeat what Krishna is telling, that also becomes perfect. ಹೇಗೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ನಿಖರವಾದ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ, ಅದೇ ತರ ಭಕ್ತರು ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚಾಚು ತಪ್ಪದಿರ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. Those who are not devotees, they are on the manoratena. They are riding on the chariot of the mind, and therefore speculating, and therefore cannot properly know or understand things as they are. ಯಾರು ಭಕ್ತರಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಭಕ್ತರಲ್ವೋ ಅವರು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ರಥದ ಮೇಲೆ ಊಹಾಪೋಹ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸಿನ ರಥದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Yeah, so Prabhupada is explaining here also, this is not the case for those who speculate on the absolute truth by dint of their own limited power of approach. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ತಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇದನ್ನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೋ ಅದು ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Perfect knowledge is called parampara, or deductive knowledge, coming down from the authority to the submissive oral receiver, who is bona fide by service and surrender. ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ಒಂದು ಪರಂಪರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕೇಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಅವರು ಕೇಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮತ್ತೆ ಶರಣಾಗತಿಯ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವಾಣಿನ ಕೇಳಬೇಕು. Yes, this is very nicely explained also by Lord Krishna in the Bhagavad Gita. ಇದನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. To have what is called tattva darshan, to have understanding or knowledge of the absolute truth, there are three things needed. ಕೃಷ್ಣನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. This very often quoted verse, tad vidi pranipatina pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattva darshinaha. So
this is pranipat means having a submissive mentality. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಅಂದ್ರೆ ಶರಣಾಗತ ಮನೋಭಾವ ಇರಬೇಕು. Yes, and then pariprashnena sevaya. Sevaya. Before sevaya actually is prashna. Being inquisitive and rendering of service. ಪರಿಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸೇವೆಯ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಮನೋಭಾವ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. So Prabhupada continues here, one cannot challenge the authority of the Supreme and know him also at the same time. ಭಗವಂತನ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಹಾಗೇನೆ ಅವನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Krishna is not obliged to reveal himself to anyone. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ. ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. We cannot force Krishna to reveal himself. ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸು ಅಂತ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. In the same way that we cannot force someone to love us. ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅದೇ ತರ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Love, actual love is natural, spontaneous. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. Yes. So Prabhupada continues, one cannot challenge the authority of the Supreme and know him also at the same time. Yeah, I just mentioned. Yeah. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. He reserves the right of not being exposed to such a challenging spirit of an insignificant spark of the whole, a spark subjected to the control of the illusory energy. ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂತ ಕೇಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. So there are two ways to receive knowledge. One is called the ascending process, using our own limited means to try and understand things, or the other one is called descending, coming down from higher authority. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ತರ ವಿಧಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮಿತವಾದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆಯೋದು. Materialistic persons as well as gyanis or mental speculators, they adopt the ascending process. ಯಾರು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಈ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರವೃತ್ತಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. But the transcendentalists, they accept the process called parampara. Parampara means descending knowledge. ಯಾರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರು ಪರಂಪರಾನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅವರು ಆಶ್ರಯ ಪಡಿತಾರೆ. The devotees are submissive, and therefore the transcendental knowledge descends from the personality of Godhead to Brahma, and from Brahma to his sons and disciples in succession. ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಒಳಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ನಾವು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. This process is helped by the super soul within such devotees. ಈ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನು ಅಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. That is the perfect way of learning transcendental knowledge. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. So last paragraph, long purport today.
little long purport. Last paragraph. This enlightenment perfectly enables the devotee to distinguish spirit from matter, because the knot of spirit and matter is untied by the Lord. ನಮ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎರಡನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಂಟನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪಡಿತೀವೋ ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಕಟ್ಟಾಕಿರೋದನ್ನ ಅವನು ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ. This knot, which is in everyone's heart, is called ahankara. ಈ ಗಂಟೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. And it falsely obliges a living being to become identified with matter. ಈ ಗಂಟು ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಬ್ಬನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತೆ. 2 days ago we went to Melkote. We had a nice yatra in Melkote. 2 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಮೇಲ್ಕೋಟೆಗೆ ಯಾತ್ರಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ. And there I met one devotee whom I had not seen for over 30 years. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಭಕ್ತರನ್ನ ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ. So he was telling me that actually after I left the temple, then I became mentally like disturbed, and I became like schizophrenic. Schizophrenic is a severe mental disorder. ಅವರು ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ಈ ಭಕ್ತರ ಸಂಗಡ ಅಥವಾ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ. Schizophrenic is when we forget who we are and we think we're somebody else. ಆ ತರ ಕಾಯಿಲೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅದು ಎಂತ ಕಾಯಿಲೆ ತರ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮರ್ತೋಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಬೇರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. So I was telling him, don't worry, everyone in the material world is actually schizophrenic. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅದೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ. We all think we are this body. But actually we are spirit soul. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈ ದೇಹ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು This is schizophrenia. This is the disease of misidentification with who we are. ಸೊ ಇದು ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣ. ನಾವು ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ನಾವು ನಾವೇ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. So in Sanskrit this is called ahankara, false conception, false identification of who we actually are. ಇದನ್ನೇ ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವ ನಿಜವಾದಲ್ವೋ ಅದೇ ನಾವು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is this ahankara that is making us do so many things that are creating karmic reaction. ಈ ಅಹಂಕಾರನೇ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದ ಕರ್ಮಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕರ್ಮಫಲ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Yes. As soon as this knot is loosened, and here it mentions, Prabhupada mentions that that this knot can only be untied by the Lord. So as soon as this knot is loosened, therefore all the clouds of doubt are at once cleared off. ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಗಂಟನ್ನ, ಈ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿನ ಅವನು ಬಿಚ್ಚುತ್ತಾನೋ, ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡೌಟಿನ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. One sees his master and fully engages himself in the transcendental loving service of the Lord, making a full termination of the chain of fruitive action. ಯಾವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಯಜಮಾನನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯುತವಾದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. In material existence, a living being creates his own chain of fruitive work and enjoys the good and bad effects of those actions life after life. ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನ ತಾನು ನಿರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರದ ಫಲವನ್ನ ಅವನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದು ಜನ್ಮಾಂತರದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ.
So, but as soon as he engages himself in the loving service of the Lord, he at once becomes free from the chain of karma. His actions no longer create any reaction. ಆದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಯುತವಾದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ಅವನು ಈ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. So the simple lesson being given here in the purport is that when we become devotees of Krishna, we put an end to this chain of karmic reaction. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಪಾಠ ಏನು ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನಾಗ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಫಲ ನಮಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Activities of devotees in Krishna consciousness do not create karma. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಅವನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So therefore, very quickly we should all become pure devotees. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬಹಳ ಬೇಗ ಕೃಷ್ಣನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ನಾವು ಆಗಬೇಕು. Yes? Yes. Hare Krishna. This is actually the last verse of a series of verses we have been studying in this section of the Bhagavatam that explains, maybe in 7 verses, the whole scientific process how to become freed from this material world. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 7-8 ಶ್ಲೋಕಗಳು ನಾವೇನು ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ how to get free? Yeah, how to get freed from karmic reaction, how to get freed from this material entanglement. ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೀವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಾವು ತೊಡೆದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ 7-8 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So it began actually verse 17, Srinvatam Swakatha Krishna Punya Sravana Kirtana Ridyantastoya Badrani Vidunoti Suritsatam. That simply on a regular basis by hearing Krishna Katha, hearing from Bhagavad Gita, hearing from Srimad Bhagavatam, all that is abhadra, unwanted things, impure things in the heart, just like if we take a cloth, we continue to clean, then the mirror will become clear. ಸೊ ಇದು 17ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶೃಣ್ವತ ಸ್ವಕಥಾ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ನೆಲನ ಒರೆಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಶುದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. And therefore that is why we should attend, as you're all doing, as we are all doing, Srimad Bhagavatam class. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಪಠಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಭಾಗವತನ ಸೇವೆನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿತ್ಯಂ means always or every day, hearing from Srimad Bhagavatam and associating with those who are practicing the teachings in the Bhagavatam. ಭಾಗವತ ಸೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಭಾಗವತ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಾಗವತನ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಯಾರು ಭಾಗವತನ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. Hare Krishna. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Any questions? Any doubts? ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ? Yes, भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, ये श्याम तंत्र गतम पापम जनना सुकृतिनो अर्जुन, जिनके सारे पाप कर्म नष्ट हो चुके होते हैं भक्ति में, वही भक्ति में आते हैं. तो फिर भक्त ना कष्ट क्यों पाता है जब पाप नष्ट हो चुके होते हैं? जैसे अगर अभी कोई भक्त, जैसे प्रभु जी मेरा महाराज जी मेरा पर्सनल जैसा मेरा लक्षण है कि जैसे मुझे ना डर लगता है, इंसेक्ट से बहुत ज़्यादा डर है. तो अगर मेरे पिछले जन्म के कर्मों का ये फल है कि मुझे इतना बहुत ज़्यादा मेरे को फियर है, फोबिया जैसा ऐसा डर है, अगर मेरे पिछले जन्म के कर्मों का फल है कि मुझे इस कारण से इसमें डर लगता है, तो भगवान कहते हैं ना
कि हम भक्ति में जब आते हैं तो हमारे आने से पहले हमारे पिछले जन्म के सारे कर्म पाप फल नष्ट हो जाता है, तो फिर वो फिर क्यों है, भय क्यों है? Mataji is asking if tesham antarata papam, if all the sinful reactions are gone and such a person is in Krishna consciousness, so then why do you have to suffer in this life? Means if all our karmic reactions are over, then such a person will come into Krishna consciousness. And Mataji is asking if I am in such a way, then why I have a phobia of insects. So even though I'm in Krishna consciousness, which means all my karma has gone, but still I am still like phobic to insects. Phobia? Phobic to insects. Phobia of insects. Huh? She starts jumping when she sees the cockroach. So why she is so much phobic to Haribol. Actually, it is nicely described by Sri Rupa Goswami. When we become devotees of Krishna, Hare Krishna, we are actually turning off the switch of karmic reaction. Just like when the fan is going, if we turn off the switch, it will not stop immediately. It will continue to turn, but slowly. So your phobia will gradually diminish. महाराज जी बता रहे हैं कि हम रूपा गोस्वामी बता रहे हैं कि रूपा गोस्वामी के अनुसार जो व्यक्ति कृष्ण प्रज्ञ में आता है, वो जैसे कि वो उसका कर्मों का फल धीरे धीरे कम हो रहा है. जैसे कि हम फैन के स्विच जब दबा के उसको ऑफ करते हैं, फैन इमीडिएटली बंद नहीं होता है, वो धीरे धीरे चल के फिर बंद होता है. तो ऐसे ही आपका जो फोबिया है आप धीरे धीरे चला जाएगा. Yes. महाराज जी जैसे उसको मैं देखती हूँ, मन में सोचती, जैसे इसमें ये भी कृष्ण का ममे वंशो जीव लोके ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति. तो ये सब जो थॉट्स है, ये सब भगवत गीता कृष्णा की जो बातें मैं सोचती हूँ, श्लोक रिसाइट करती हूँ कि उस कृष्ण, वो भी कृष्ण का पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल वो भी है और मैं भी हूँ. तो एक्चुअली में सिर्फ बॉडी का डिफरेंस है, आत्मा सोल एक ही है. पर फिर भी मैं ये सोचने के भी बाद में मेरे को मैं और हरे कृष्णा महामंत्र का जोर से चैंटिंग करती हूँ अपने इसको कंट्रोल करने के लिए. पर मेरे पर वो जो डर है वो इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ. तो मैं इस डर से ना छुटकारा पाना चाहती हूँ कि तो मैं कैसे. Give him a chance to translate. Mataji is completely bewildered by the insect phobia. So although she understands that it is a jiva from Krishna, according to the Bhagavad Gita of the principles, it is also Krishna's creation, and the Krishna is also there in the insect's heart. But still, I'm not able to get over the phobia of the insects. We don't. What I should do? You don't have to pay your obeisances to the different insects, but idea is that if it is simply something that is a residue means something from before that somehow is there, and just you should continue to take shelter of Krishna, and it may be part of. It may be that residue, that phobia for the insects may be with you for a whole lifetime, or Krishna, he may at one point decide, okay, enough. Meantime, you have to tolerate the inconvenience that is there when you come across an insect or whatever. जो पिछले जन्म का जो रेसिड्यू है मतलब जी, उसके फल से हम ये जीवन में भुगत रहे हैं. जब तक पॉइंट तक जब कृष्णा चाहते हैं कि हाँ अभी नहीं होना है, तब आपका वो डर चला जाएगा. Actually, there are two reasons why things happen to us. दो कारण हैं हमको क्यों हमको ऐसा होता है. What we may consider as unfavorable or bad things. हाँ, जो बुरा चीज हमको हो रहा है. Generally, it is because of karmic reaction. सामान्य से हमारे कर्मों का फल से हम ऐसा भुगत रहे रहते हैं. Or sometimes it may be because Krishna wants us, because Krishna is arranging for his own reasons we may not understand. हाँ, और दूसरा कारण होता है कि कृष्णा ऐसे सब अरेंज कर रहे हैं और उसको क्यों ऐसा कर रहे हैं वो सिर्फ कृष्णा जानते हैं. Just like many people, they ask,
Arjuna is a pure devotee. Why he became confused? हाँ, जैसे कि कहीं लोग पूछते हैं अर्जुना शुद्ध भक्त है लेकिन फिर भी उनको कंफ्यूजन क्यों हुआ? Different great personalities. Parikshit Maharaj, also pure devotee, but he put a snake on the body of Shringi's father. हाँ, जैसे कि परीक्षित महाराज भी शुद्ध भक्त थे लेकिन उन्होंने एक मरा हुआ सांप को श्रृंगी के पिता के गले में डाल दिया. So that means that for in the case of Arjuna, because he was confused, therefore we received the teachings of Bhagavad Gita. Yeah. हाँ, जैसे कि अर्जुन के केस में अगर हम देखें तो अर्जुन जो कंफ्यूजन में थे इसीलिए हमको भगवद गीता प्राप्त हुआ. And because Parikshit Maharaj performed that, then put the snake. Therefore, we are receiving the Srimad Bhagavatam from Shukadeva Goswami. हाँ, जो परीक्षित महाराज ने ऐसा कार्य किया तो इसके वजह से हमको श्रीमद् भागवतम मिला. Yeah. So possibly Krishna is giving you this little phobia to make you remember that this material world is not a nice place. To help you remind. भगवान ऐसा कर रहे हैं कि आपको हमको कन्विंस कर रहे हैं कि ये भौतिक प्रपंच में हमको नहीं रहना है. It's a dangerous place. Yes. Should see it like that. एक और क्वेश्चन वो तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुन अमानिना मानतेन कीर्तनीय सदाम. तो राधानाथ स्वामी जी के लेक्चर में मैंने सुना था कि इसको आप नेक का बेल्ट बनाइए. तो हमको क्या करना चाहिए, इस श्लोक को अपने जीवन में कैसे उतारना चाहिए? Yes. हम हरि का सदा कीर्तन कर सकें. Yes. हाँ, तृणादपि सुनिचेन, that verse we have to wear it as a necklace. Yes. So then how to implement in our own life? Every day we chant the mantra and meditate on it. हम हर रोज वो मंत्र को बोलना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए. And every time you see an insect, you think of Krishna. हम जब भी वो कीड़ा को देखते हैं तब आप कृष्ण के बारे में सोचना है. Means as often as possible, actually always, we should come to that point of remembering our very insignificant position and position of total dependence on Krishna. हाँ, हम हर बार सोचना है कि हम इतना तृणमात्र हैं और भगवान का जो उतना उन्नत श्रेणी का स्थान है उसके बारे में हम सोचना चाहिए. And it is simply due to this ahankar, as we are reading this morning, to false understanding, false identification with this body, that we forget our position of dependence. Ahankar means actually cultivating the feeling of master. Dependence means developing the mentality of servant. अहंकार हमारे हृदय में होने जैसा ही हम भगवान को भूल जाते हैं और अहंकार के वजह से ही हम अपने आप को प्रभु समझते हैं और अपने आप को दास नहीं समझते हैं. Das, anudas, 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 anudas. So we, by practice, we gradually come to understand our position of total dependency on the Lord. हाँ, हम ऐसे सोचते हैं, हम ऐसा सोचना चाहिए कि हम दास है और ऐसे अपने जीवन में पालन करते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि लास्ट लाइन we are totally dependent on the Lord. Yeah. हम भगवान के ऊपर हम निर्भर होना चाहिए हमेशा. Always praying actually for the mercy of the Lord, just like we are reading here, that unless Krishna himself unties this knot, we will remain bound. So we must attract the attention and the mercy of Krishna to help us.
हम कृष्ण के कृपा प्राप्ति होने के लिए हमको प्रार्थना कर रहा है और कृष्णा हमारा जो हृदय ग्रंथि है वो खुद उसको निकालते हैं, तब तक हम भक्ति सेवा में रहना चाहिए. Without the mercy of Krishna, we can do nothing. हाँ, कृष्ण के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं. Yes. So that is also explained. All of our activities, all of our thoughts, all of our words, moga sha moga karmano moga jnana vicetasa rakshasim asurim chaiva mohinim prakritim sritaha. When we don't take shelter of the Daivi Prakriti, internal energy of Krishna, then everything that we do will be baffled. Yeah. हम कृष्ण के आंतरिक शक्ति का शरण नहीं लेते हैं तो हम जो भी ये भौतिक प्रपंच में कार्य करते हैं उससे हम विचलित हो जाते हैं. So that means that the more we keep close association with devotees, sadhu sangha, the more we perform the chanting of the holy name, nama sankirtan, the more we engage in Bhagavat Sravana, the more we worship the Lord at home, and the more we create wherever we are, in our home especially, an atmosphere or mood of Vrindavan, then we will be under Krishna's care. हम जब भी कृष्ण का नाम का हम ऐसा करना है कि हम हमेशा कृष्ण के नाम का जप करना है और हमेशा भागवत का कथा सुनना है और जो भगवान के जो लोग होते हैं उनका साथ संग में रहना है और हमारे घर में वृंदावन का जो वातावरण है हम उसका सृष्टि हमारे घर में करते हैं. Yeah. तो हम सही जीवन कर रहे हैं. Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavat Sravana, Maturabhasa, Srimurtira, Sradhaya Sevana, Sakala Sadhana Sresta, Epancha Anga, Krishna Prema Janamaya, Epancha Alpo Sangha. That the goal or perfection of life, developing pure love of Krishna, will very quickly develop when we apply these 5 angas, 5 basic principles that we just mentioned. जैसे कि किसी व्यक्ति को कृष्ण प्रेम प्राप्त होना है तो अपने जीवन में ये 5 अंगों का कार्य वो करना है. पहले वो कृष्ण के कथा के बारे में सुनना है और भागवत कथा सुनना है, भागवत का नाम लेना है और भक्तों के संग में रहना है और भगवत मूर्ति का अपने घर में भगवत मूर्ति का पूजा करना है और मथुरावास, जो ये 5 अंगों का जो व्यक्ति अपने जीवन में करता है वो कृष्ण प्रेम प्राप्ति होने का उनका अर्हता प्राप्त करता है. Yes. According to Bhagavad Gita, Yes. every action of according to Bhagavad Gita, Yes. every action of the human being will be means it should be we should experience in next life. We may experience Every action, if it is... good action or bad action. Yes. So, one instance has happened. Last month, a small snake has entered into our backyard. Yes. So, my wife told to kill it. Yes. I was thinking it doesn't struck us or it is not coming in our way. It is going backward, it may go outside. Right. So I thought we should not kill it. Mm. But in family we can't say there is no. So I killed it. Right. So how could it may affect because it was done by influence of my wife. You should not be under the influence of your wife. But family will not go. But in such cases, she used to tell if it may bite your son or me or you, it may bite. So you should kill it. Yes. So I killed it. So how could that karma will affect me or? Actually, Srila Prabhupada relates the story when he was visiting the ashram, one ashram, where his Guru Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur,
And one snake had come out, and Prabhupada heard from above, actually was Bhaktisiddhanta telling the inmates, kill the snake, and they killed the snake. So if there is any, because snakes will, if there is any doubt that the snake may be poisonous or may be biting, because in the Shastra it mentions, although we follow the principle of ahimsa, non-violence, but there are certain specific cases where, and this is one of them, if we are attacked by some pointed object, if our life is threatened, then we may kill at that time. Or if our house is attacked, or if our wife is abused, there are a few such incidences where, according to Shastra, one can kill. It can translate for the benefit. प्रभु का प्रश्न ये है कि हमारे घर के पिछवाड़े में एक सांप आया था, तो मेरे पत्नी के कहने से मैंने सांप को मार दिया, क्योंकि हमारे पत्नी ने कहा कि वो सांप हमको हार्म कर सकती है। तो प्रश्न मेरा ये है कि हम वो सांप के हत्या करने से कर्म मिलता है। तो महाराज जी बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी एक अपने गुरु के देखने को गए थे एक आश्रम में, तो उधर एक सांप आया था। तो उनके गुरु ने, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कहा प्रभुपाद जी को उसको हत्या कीजिए, तो प्रभुपाद जी ने उसका हत्या किया। तो इसलिए ऐसा कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हम ऐसा कार्य करते हैं, जैसे कि हमारे घर को किसी ने आग लगा दिया और हमको कोई अस्त्रों से हमको अटैक किया, हमारे पत्नी को अटैक किया, तभी हम शास्त्रों के माध्यम से ऐसे कार्य में हम अहिंसावादी है, लेकिन ऐसे टाइम में हम उसको विरुद्ध करना है और हमको जो कार्य बराबर करना है उसके हिसाब से हम करना है। Okay. Yeah. Other? Yeah. Though we know everything is according to the Krishna's will, nothing is in our hand. Then also, why do we keep on worrying and having stress, getting into everything? We know that everything is according to Krishna. Then also we get stressed. We know, but actually we don't know. Otherwise, we would not be in stress. We know theoretically, but we don't actually. We have the jnanam, but not the vijnanam. Right? Many of the time we feel like we are not getting sleep nicely, we get stressed out, we have all the time we can't eat properly. So many things attack us. But why is this happening? Because our vijnan is not sufficiently developed. We know theoretically. Just like we know, we hear we're not this body. But as soon as some mosquito bite or whatever, something comes, then we become disturbed or in anxiety. So it means that our level of realization is still in need of developing, still in need of becoming more mature. As it becomes more mature, then all that anxiety will not be there. So meantime, we have to continue by practicing. We have to continue practicing, and then slowly, gradually, again, the same thing here. As Krishna sees our continuous effort to try to serve Him, to please Him, then He will give us the necessary intelligence and ability. Dadami buddhi yogam tam, as one continues to practice very nicely. So it's gradual. It's gradual, and we should not become discouraged. That why this anxiety is there. Little anxiety will be there, but gradually that will be diminished as you increase your full faith and surrender in Krishna. Yeah. It's too long. Too long, eh? Okay. कृष्णा ऋषिकेश हमारे इंद्रियों के कंट्रोलर है कृष्णा, तो फिर और हमारे हृदय के अंदर है, हृदय में आत्मा और परमात्मा दोनों हैं। आत्मा जो करती है, परमात्मा उसके साक्षी है। तो फिर कृष्णा हमारे कंट्रोल ऋषिकेश हैं, तो जीवात्मा पाप कर्म क्यों करता है? कृष्णा उसको रोकते क्यों नहीं है? क्योंकि आज अभी जो हम देख रहे हैं संसार में बहुत पाप बढ़ रहा है, सब लोग गलत काम कर रहे हैं, तो जीवात्मा के हृदय में ही परमात्मा बैठे हैं, तो वो उसको रोकते क्यों नहीं उस गलत काम करने?
Maharaj, many people are doing sinful activities. So Mataji is asking if Krishna is there as Paramatma in the Jivatma's is associated with the Jivatma. So why doesn't Paramatma stop the Jivatma doing from such sinful activities? Free will. See, government is there, and the citizen is there, police department is there. We are free to go 60 kilometers an hour or to go more. So we have this minute independence. When we're not in full Krishna consciousness, the tendency is to misuse that independence. So it's the same thing we were mentioning a little earlier. We cannot force. To get some prasadam. Yeah. We cannot force. We cannot force. Krishna does not force living entity water asmana. Krishna does not force a living entity to surrender. So therefore, love must come spontaneously, and therefore, although Krishna is there, he will not force us not to do or act in a bad way. It's up to us. Hey, from my room, asmana. Yeah, you can explain. You can explain. Translate. Yeah. तो माताजी महाराज कह रहे हैं कि हमारे हमको थोड़ा फ्रीडम रहता है हम करने के लिए या नहीं करने के लिए. जैसे कि सरकार है और पुलिस डिपार्टमेंट है, हम कार में 60 किलोमीटर के ऊपर नहीं भी जा सकते हैं, कम भी जा सकते हैं. वो थोड़ा फ्रीडम रहता है. तो आप जो करना है क्या नहीं करना है वो जीवात्मा के फ्रीडम थोड़ा ही रहता ही है. Yes.